Good evening, all. So today here we are discuss about history optional, the correct way to cover syllabus of history option in UPSC. So with us, Piyush sir is here. Hello, welcome, sir. Thank you, Vikram. Okay, so yeah, so shall we start now? So your voice is you muted, so you're not able to get you, sir. Okay, am I audible now? Yeah, you are, sir. Yeah. Okay, so can we start the session, sir, please? Yeah, definitely. Am I audible? Yes, yes, sir. You are audible, Yes, sir. sir. Okay, so sir, yeah, can you please tell brief something about history syllabus in UPSC CSC? Yeah, definitely. I'll start the like. Good evening to everyone. I hope I'm audible properly. Good Yes. evening, sir. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you all. Thank you all. Okay, so I think I do not know that whether you know me or not. So I would like to start with a brief introduction of mine. So myself is Piyush Kumar, and I think most of you, if you are interested in history options, you might have heard. Okay, I think some antisocial element is also present here. Isn't that correct? I've removed them, sir. Okay, fine. Thank you. Thank you, Vikram. Okay, so as I told you, that myself is Piyush Kumar, and if you're really interested in history, also you might have seen me like in some of the videos or somewhere with certain toppers and all. So it is quite possible, right? So okay, I have done my MPhil, and currently I'm pursuing my PhD also. And for past 11 years, I have been guiding the UPSC aspirants, precisely the history optional students, right? At the same time, I'm part of this university teaching also, so I'm associated with Delhi University as well, right? So that's the brief introduction, right? Coming back to the point, like as you all understand, okay, fine. If I'm going bilingual, it is okay. Like anyone who does not understand Hindi at all or English at all, is anyone present here? I think you all are comfortable with both the languages. Yes, sir. Anybody who is not comfortable with Hindi, sorry. Fine. So now, what is the basic objective of this session? The basic objective is that what is the correct approach towards this subject. So first of all, I'll tell you that since this is the month of like almost April is about to end, so we are going to enter into May, and this is the time when you should, if you're really sincere for your next attempt, like 2024 attempt, in that case you have to be very sincere, like from this point only. आपको अभी से बहुत sincere होके शुरू करना है. Now, the moment it comes to UPSC preparation, there's one thing which is one of the biggest decision for the UPSC aspirant is the subject optional. Like of course, everybody has to choose one optional paper, and the optional paper must be selected in such a way that like as you are going to stay with the subject for a longer period of time, and a longer period of time, and in fact like it is one subject which is mark fetching, as you all know that it's quite possible that in the optional you're scoring somewhere around 280, let's say 280, or 300, 320, 310. So the range may vary from 280 to 310 or 320, and it is out of 500, and it is really a kind of very good score. And if you have really scored this much good in if you have really scored this much good, in that case definitely you are going to score, definitely you are going to get good rank in UPSC. So optional does play very important role, and that's why when it comes to selection of the optional, I must tell you that this is again very important. तो आपको जब भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत सेलेक्टिवली या बहुत सोच समझ कर आपका इंटरेस्ट जो है, या फिर आपका कंफर्ट जोन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती है, उन सब के हिसाब से आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए. So here I am to discuss about precisely one optional, that's history optional. But it's very unfortunate that people are not able to take the correct
approach or the correct approach, or let's say the way of preparing this optional paper. So I'm simply here to tell you that what will be the right approach. And as I have already told you that optional is very important, never ever ignore this. Don't ever try to, let's say, don't ever try to shape your UPSC journey without optional paper, because there are three papers which which do play very important role in your in your selection. That's first is optional, the second is essay, and the third is ethics paper. Because here the range of marks is too high. At one hand, if I talk about optional, at one hand, if there are some people scoring 200, on the other hand, people are scoring 300. So if there is a gap of 100 marks, so you all can understand that this is very important. Now the point is that, like, let's say you have decided history to take as an optional paper. Now what are the things that should be done? One by one, there are 4 points that I'm going to discuss in this session, and after that I'll be welcoming your questions. So if you have any doubt precisely with related to the subject, I'll be definitely answering them. So the first thing that you should do, that you should see the syllabus very carefully. And I'm telling you honestly that since I have been teaching this subject for last many years, and I have noticed that I keep on telling the students कि syllabus देख लो, syllabus देखो, syllabus देखो, but वो नहीं देखते हैं. जब आप syllabus देखते हैं तो आपको समझ में आता है, you are able to understand कि what is the range of the subject, and that's very important. Like, what are the things which are included in the syllabus? Because history is undoubtedly a very vast subject. And the moment you have been preparing for UPSC, if you're not able to minimize the content of it, or minimize the reach, or let's say extent of the subject, in that case it's going to be very problematic for you. तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि आपको बहुत अच्छे से ये सिक्योर करना है कि आप ये समझ लें कि इस सब्जेक्ट का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. तो वो सबसे पहले तय करना जरूरी है. When you are fixing the range, in that case you'll be able to understand or identify or recognize some important areas. Okay, these are the areas which sounds to be or which seem to be important. तो ये काम सबसे पहले करिए कि आप सिलेबस देखें. अच्छा, हिस्ट्री के सिलेबस के साथ एक खास बात है कि बहुत डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है. सिंस इट इज वेरी डिटेल्ड, सो frankly speaking, you do not need, like, you actually do not need to identify, let's say basically to decode the subject. Okay, it is already given in a very decoded manner. So since it is given in a very decoded manner, so you don't need to decode it, because each and every minute aspect has been given. Let's say Mauryan Empire. अगर मौर्यन एम्पायर के बारे में हम बात करें तो अगर वो लोग सिर्फ मौर्यन एम्पायर लिख देते तब भी काम चल जाता. लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मौर्यन एम्पायर, हाउ एग्जैक्टली दे हैव बीन राइटिंग, they are writing that the what are the sources we have been using for Mauryan Empire. So they have written about Arthashastra, they have written about, like, Indica, and then Ashokan inscriptions. So sources are also written. Okay, these are the sources. And then Chandragupta Maurya, then Ashoka. Then what are the dimensions of Ashoka? That also they have written. So they have given a very detailed syllabus, and that's how you won't be having difficulties in understanding the subjects. You'll be easily you'll be able to understand the subject easily, or the, let's say, dimensions of the subject. So the first thing that you'll be seeing, the first thing that you'll be doing, you'll be seeing the syllabus of the paper. Now, while seeing the syllabus, let's say if you're in a dicey mood, whether you should go for this optional paper or not, I think that can be also made very clear if you're seeing the optional paper. तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा भी मन में इफ एंड बट है कि आपको हिस्ट्री ऑप्शन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि आप सिलेबस देखेंगे. उससे आपको बहुत हद तक वो क्लियरिटी आ जाएगी दैट लाइक यू वेदर you are on a right track or not. Now, the second thing, which is again important, the second thing is about the PYQs, the previous year questions. I must say that from 2011 onwards, the UPSC had changed its pattern in history optional, and the kind of questions which are being asked, they are very much changed. ठीक है, यूपीएससी भी अपने आप को धीरे धीरे इनोवेट करता है. अगर आपको लगता है कि सेम वही टेम्परामेंट है, इट्स नॉट ट्रू. और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक बार 2090 के सॉरी लाइक 1990 के क्वेश्चंस जो है, 1990 के क्वेश्चन को 2015, 16 और 19 के क्वेश्चन से जो है कंपेयर करके एक बार देखें, then you'll be able to sincerely you'll be able to understand that UPSC itself is very innovative while asking the questions. They're not asking the same traditional questions what they had been asking before 2000, or let's say before 2010. So they are continuously doing the experiment. So when you see the PYQs, you then again, like, whatever the things I had been discussing for the syllabus, the same thing I can say here also.
Now there should be some synchronization between the syllabus and the question papers. And I'm telling you that everything which is given in the syllabus, it's not necessarily that everything what is given in the syllabus is important for your is important important for your preparation also. It's not necessary. There are so many parts of syllabus, right? They are not very relevant anymore. तो लोग उससे यूपीएससी उससे या तो बाहर आ चुकी है, या फिर इतने सालों में जो हिस्टोरिकल रिसर्चेस हुए हैं, एंड देयर आर सर्टन एरियाज वेयर लाइक वी गॉट डिफरेंट परसेप्शन, या फिर उसमें क्लैरिटी आ गई। कोई टॉपिक ऐसा था जो पहले कभी डिबेट में हुआ करता था या पहले बहुत बर्निंग टॉपिक हुआ करता था, बाद में जो नई हिस्टोरियोग्राफी आई उसने पूरी तरीके से उसको चेंज कर दिया, और जब उसको चेंज कर दिया तो उसकी रेलेवेंस कम हो गई। ठीक है, जब उसकी रेलेवेंस कम हो जाती है तो लोग यूपीएससी इतना नहीं पूछती है फिर इसको। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि देयर आर सेवरल सच एरियाज like you'll be able to identify कि from here the questions are not being asked. On the other hand, you can find that there are certain areas which had become so important that very frequently the questions are being asked from here. So I think being a being a serious aspirant, like this R&D you have to do, and that's how you'll be getting you'll be getting this clarity ki, okay, like this is how you need to prepare it. Now that is very important. So the first thing, that see the syllabus. The second thing, POIQs. And the third thing, I'll say that there should be some sort of synchronization between the POIQs and we can say POIQs and the syllabus, right? तो जब आपने ये कर लिया, ठीक है, then you started understanding कि okay, like these are the areas what you need to prepare for this subject. And आपको सब कुछ पढ़ना है ऐसा नहीं है, आपको कुछ खास areas है जो पढ़ना है, या कुछ खास areas है जिसमें आपको like you need to pay greater attention. But then there are certain other areas, very simple kind of questions are being asked from there, so you don't need to pay that much attention there. Like this is the second thing, or the third thing that I can say. Now the most important problem with this subject, like this is mostly taken by the students in this way. Yeah, I think like this subject is very simple and there are some content which is written in the books, and just by reading that content you'll be able to produce a very good answer, because when it comes to mains examination or the option, you need to write the subjective answers. तो लोगों को ये लगता है कि आप एक किताब को पढ़ेंगे और किताब को पढ़ने के बाद जो है आप आंसर उसका कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्यों में मिसकंसेप्शन है, मैं इसके बारे में थोड़ा बोलूंगा। ठीक है, आई वुड प्रेफर टू स्पीक अप समथिंग on this particular issue. Normally what happens, like every discipline does have its own specifications. ऐसा नहीं होता है कि हर सब्जेक्ट को आप एक ही तरीके से ट्रीट करें। For the sake of example, let's take caste as one issue. And I hope you all must be agreed or convinced with this idea that caste is being taught to you in anthropology, caste is being taught in political science, sociology, and history as well. But if you think that like same approach has to be same approach should be there to understand caste in different discipline, then it is incorrect. When you have been understanding caste in anthropology, that's a very different approach that you need to follow. When you are doing the same thing in political science, the approach is altogether different. In sociology is very different, and in history again it's very different. So in history, like it's more about the evolution of caste. Like in political science, caste as one of the very dominant or the prominent social institution. So in every subject you can find that the same issue it's quite possible that the issue or the subject is very similar, but then the treatment is very different. And this is the reason because of what you have to understand the वेरी मच नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एग्जैक्ट नेचर क्या है, और उसी हिसाब से आपको कंटेंट जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट थिंग और द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू, यू जस्ट गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ द सब्जेक्ट, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री और व्हाट एग्जैक्टली वी स्टडी इन हिस्ट्री। बिकॉज इफ यू कीप ऑन सीइंग द सब्जेक्ट जस्ट एज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कि ओके दीज आर सर्टेन फैक्ट्स दैट यू नीड टू रीड, इन दैट केस आई एम टेलिंग यू दैट योर अप्रोच इज वेरी रॉन्ग. And in fact, if you are trying to deal with the subject very factually, in that case, at least I can guarantee you that in paper one, you won't be able to score very good. In paper two, like of course, their approach is very different, and that's the reason because of what the possibility is there that you can score in paper two. But in paper one, definitely you won't be able to score good. So first you understand the nature of the subject, because as I told you that every subject is having a different nature. So as per the nature of the subject, as per the meaning of that discipline, you try to understand the relevant content, and then you identify कि okay, every topic or theme should be prepared with this particular idea, and अगर आपने उसी तरीके से फिर इसको prepare किया, then it is fair enough for you.
But then when you have decided, let's say okay, this is the most difficult part when it comes to understanding of the subject, because if you're coming from history background, and if you have really done your graduation or master from a very good university, in that case you might have developed these kind of things. You understand that what is historiography, what are the different perception in historiography, how come different schools are there, and how come they have been giving a different let's say no, different approach to understand or make us understand about the subject. These are the other things, like you'll be able to understand. अगर आप उस डिसिप्लिन से है, आपके लिए आसान है समझना. अगर उस डिसिप्लिन से नहीं है तो थोड़ी मुश्किल होगी समझने में. I think there you can definitely take the help of any mentor who can really guide you to in understanding that subject. Okay, so let's say when you have understood this, okay, you understood that history is like this, and in fact while understanding the content I have to go in the same way. Let's say now you are having the clarity over this. Now what you are supposed to do next? So of course then you need to jump into the content. Now when it comes to content, there are two ways of preparing the content. Okay, one way that you have decided to complete, you have decided to cover the subjects by your own. आपने डिसाइड किया कि मैं कुछ एक बुक लिस्ट बनाऊंगा और उस बुक लिस्ट में मुझे खुद प्रिपेयर करना है. नाउ व्हेन यू हैव बीन गेटिंग इनटू द कंटेंट एंड इफ यू हैव बीन डूइंग इट बाय योर ओन, फर्स्ट आई विल डिस्कस दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू हैव बीन डूइंग इट बाय योर ओन. जब आप ने डिसाइड किया है तो सबसे पहले यू मेक द लिस्ट ऑफ द बुक्स. ठीक है. And if you have this this particular belief that from one book you can complete the whole syllabus, there is no such book, because no book has been written for this perspective, this perspective that it should be used for UPSC. It's incorrect. Like, it is completely depending up to UPSC that what book they have been recommending, and it's not necessary that only one book they have recommended while making the paper. Like, they always have this luxury to ask the questions from different books. Now, it's depending on various other things. So this is the reason you never ever try to rely on a single book, because neither a single book is giving you the complete content, or not the all the dimensions. The books are always having certain limitations because they have been developed in a different perspective, with a different perspective. And that's how try to make the list of the books as per the syllabus and the previous year question paper. आपने देखा कि previous year question paper में ऐसे questions बहुत आते हैं, syllabus में भी दिया हुआ है. Then you should have some idea कि what is the right content or what is the relevant book for this. So in every segment, ancient, medieval, modern, and world, I think you're not supposed to read the whole books, right? There are many books you have collected, and then you have been reading the whole book. You just make one book as your base book, and by making one book as your base book, then you need to collect the remaining content from the different books, and there you don't need to go for the reading of the whole book as such. Never ever read the complete book. एक किताब जो आपकी बेसिक्स है, आप उसको पूरा पढ़िए, और जो उस बेसिक किताब में मिसिंग है, आप उसको बाकी जगह से कॉम्प्लीमेंट करने की, सप्लीमेंट करने की कोशिश करिए. ठीक है. So this is the right way. And then of course, like, if you have been if you have covered the content, and then the next part is coming, the answer writing practice. Look, answer writing practice is very important. Answer writing practice is very important in this regard, that in this regard, that ultimately what information you do have, that's not very important. उससे ज्यादा important क्या है कि आप जो प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं. यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एंड ज्यादातर बच्चे जो ग्रेजुएशन करते हैं हिस्ट्री से या मास्टर्स करते हैं हिस्ट्री से, दे हैव डेवलप्ड दिस हैबिट of writing the long answers, right? So when they have been asked to finish or write, let's say 17-18 answers in just 3 hours, they are facing difficulties. And in fact, while writing the answers in your graduation, specifically what happens, you do include many unnecessary stuff or irrelevant stuff. I think you have to save your time there. You are not supposed to include the irrelevant content here, because that irrelevant content is neither getting you marks, rather it's spoiling your time, and you won't be able to finish the paper. तो सबसे पहले वो writing वाला part है, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है, because if you're not able to work properly on this on the writing वाला part, in that case, in the examination hall, will be having you'll be having certain problems. The second way of preparing is, of course, attending the classes. Now, if you're attending the classes, so are you going to get something very different, or very something very, very specific, special? Like, I must say, this is incorrect, right? Now, what are the benefits if you have been joining the classes? Like, what are the benefits you have been getting? Like, first of all, it minimizes the duration of your preparation. How come it minimizes the duration? Because when you have been trying to cover the content by your own, and you have been really struggling with this question, that okay, this is one, like, this type of question has been asked, from where I can get the right content or the relevant content, this becomes a major problem. Of course, being an UPSC aspirant, you do not have access to all these books.
So collecting the right content, ठीक है, collecting the right content. Ria, let me finish by content and then I'll come to the questions. Don't worry. Okay, I'll take the questions of everyone. If you have a valid question, I'll definitely entertain it. So then what is happening? You don't need to struggle for the right content. You'll get it. Then it minimizes your time, because if you had been trying to cover the things by your own, in that case, what is going to happen? Like, of course, you have to read everything, you have to understand. And while doing this process, what happens? Sometimes you read many unnecessary stuff, and sometimes you are carried away also. Like, you find, okay, okay, this might be also important. Because one basic problem I have realized with the student, that while reading, like somehow they develop this mind or this idea that the facts are very important, and that's where they start putting greater effort for mugging up the facts or for collecting the facts, whether it is not very important. Sometimes they have, like, let's say, I'll be giving one example. Suppose you have been reading the Neolithic Chalcolithic chapter from the book of Upinder Singh. So when you have been reading this book, what happens? Like, they have actually given a very detailed discussion. That book has given a detailed discussion over the various sites, and within the sites they have classified the sites into various zones, and then like within these zones, what are the differences that could be found. And I have asked, like, I have been asked this question very frequently by the student कि सर मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया है, अब ये बड़ा बोरिंग लग रहा है. मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं उनसे कि क्या जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, लाइक व्हाट कंटेंट यू हैव बीन रीडिंग फ्रॉम दैट बुक, you just tell me honestly, do you find any such question in UPSC where you need to produce that content what you have been reading in Upinder Singh? ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कंटेंट आप पढ़ के टाइम वेस्ट करते हैं, वो कंटेंट कई बार एकदम इररिलेवेंट होता है और उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक है नहीं. ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सेलेक्टिव होना बहुत जरूरी है. और क्लासेस क्या करती है? क्लासेस थोड़ा इसमें आपको टाइम बचा देती है, क्योंकि वो क्लासेस कभी भी बहुत इररिलेवेंट कंटेंट आपको डिलीवर नहीं करती है. ठीक है, so you, like, somehow you are saving your time from reading various books and collecting content, and it's getting in the right dimension. One another benefit of attending classes is that when you read one book, it develops always one dimension, right? When you read multiple books on the same topic, in that case, it gets you, like, the multiple dimensions. And in fact, the moment it comes to that particular word, analysis in history, what is analysis in history? Now you might be wondering for like, this question, then what is analysis? The analysis is nothing but a, when a single issue is being developed or written by different historians differently, and when you have been putting all of them together, that brings the analysis of the topic. कि एक ही इशू है, उसको हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरीके से देखा है, तो वो आपके डायमेंशंस डेवलप करता है. बट ज्यादातर बुक्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? ज्यादातर बुक्स जो है वो एक डायमेंशन पे फोकस करती है, क्योंकि किताबें ऐसी ही लिखी जाती है. दैट बुक हैज बीन रिटन डाउन ओनली फॉर दिस पर्पस, दैट ही इज द ऑथर इज ट्राइंग, नॉट ही, द ऑथर इज ट्राइंग टू like present his own perspective or her own perspective over that particular issue or the, like, part of history. When you have been reading it by your own, unfortunately you are failing in doing so, that you are never able to collect the various dimensions of any subject, and that is always a kind of, that always like that particular part is missing in your answer. And if you have been really missing that, in that case, like, you cannot expect a very good answer as such. So or very good marks also. So this is another thing that, like, that's very important. And finally, as I have already told you, that answer writing is very important. And in fact, from the first day itself, if you believe that you'll be able to write a very good answer, that's incorrect. Because even though if you have studied the subject in your graduation, as I told you, that your approach was very different towards the subject, and now the approach and the demands which is required is very different. And this is the reason because of what you have to, like, go for the answer writing in a very repeated way. Because if you have been doing it, that's how you develop that, that habit, or let's say that skill of writing the, let's say writing the ये introduction, या आप एक बेहतर introduction कैसे लिखे, आप कम शब्दों में, that's also very important, in less number of words, how to produce a very good introduction that can really introduce the subject. Then how to switch from introduction to, let's say, body part. Now, how to arrange this body part? Because in history it happened that sometimes there is only one dimension in the body part, sometimes more than one dimension. So it's not about argument and counter argument. Sometimes the same issue can be developed in 3 or 4 different perspectives. तो अगर हमको 4 पर्सपेक्टिव एक आंसर में लिखना है, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, वो किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे, ये भी एक बहुत अहम सवाल होता है. So answer writing is very important, and in fact it can develop with a regular practice.
and of course the regular mentorship also. If somebody is perpetually guiding you in this, so there also you have been getting the help, which is ultimately not happening through the test series. That's the last thing that I'll be saying. So when if you have selected history as an optional paper, so these are couple of things that you have to keep in mind. And as I told you that if you're since beginning, if you have been reading the right thing, you're not wasting your time by reading the unnecessary things, by developing or by doing something else. In that case, I believe that he'll be you won't fail in this paper, and then you'll be able to score very good, because the kind of struggle students are making specifically in history optional, you won't be trapped in this particular struggle, right? That's all from my side. So now, as I told you that if you have any doubt, I'll be welcoming all the questions, not a problem. Already there is a question by Ria Tripathi. Are you there, Ria? Aja, you are there. Ria is asking, sir, I have a question. I'm in BHU and I'm in second year in college. Can I join history classes now or the next year? Well, if you're second year, if I'm not wrong, you must be finishing your second year. Now you must be entering into your third year. So if you're entering into third year, or if you're towards the end of your second year, definitely you can do it. Why? What's the benefit of it? So if you're doing it right now, in that case, optional is at least history optional. It's not very it's very dynamic. So most of the content remains same, and in history also there is some sort of dynamic aspect, but they are very slow. They are not like the other papers where you need to collect the information from the current in order to put it here. So okay. So I think, Ria, towards the end of the second year, like second year, you can definitely join, or in the middle of the second year, you can join. You can go for some answer writing practice and all. If you are really willing to give your first attempt immediately after your graduation, then right, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा स्टैटिक होने की वजह से क्या होता है कि आप उसको कर लेंगे धीरे 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 धीरे, आंसर राइटिंग और ये सारे प्रैक्टिसेस, थोड़ी रीडिंग, थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन विद अदर थिंग्स. सो आई थिंक you should start your preparation like from this particular point. And in fact, since I told you that I do teach in Delhi University, so I have seen that many students, they do cover their on optional paper much earlier, because and then they focus on the general studies towards the last of your preparation. तो जनरल स्टडीज क्या होता है, थोड़ा डायनामिक होता है. डायनामिक होने की वजह से क्या होता है कि उसमें आपको करंट की बहुत सारे इनपुट्स डाले होते हैं. तो लोगों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑप्शनल को खत्म कर लेते हैं, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, so that can get the confidence. Because this is true that doing optional and GS simultaneously is problematic. वो थोड़ा, क्योंकि मैंने जिसको देखा है कि जो लोग ऑप्शनल और GS simultaneously करते हैं, sometimes they had been wasting around 6 to 7 hours in the classes itself, and they are not left with this much energy, I must say, that they are going back to their places, and they are reading by, like, reading some more content, or they are doing the self studies. So this is the reason, because of what this is the reason because of what, if you're doing it right now also, there's no problem. Online or offline, okay, I think both are okay. I have seen many students, they always prepared for the UPSC online, but they also became successful. Now it is depending on your own discipline. What I feel that sometimes in the online classes you are not able to maintain that discipline. ठीक है, आज नहीं कल देख लेंगे वाला attitude बहुत ज़्यादा होता है. ऑफलाइन में क्या होता है कि you have to come to the class, otherwise the class will be missed. तो मुझे लगता है कि it's better to do offline, but if you are not willing, like not in a condition to come offline, so in that case online is also okay. But in online you have to be highly disciplined, because there was no fellows around you, तो आप थोड़ा entertainment नहीं हो पाता है क्लास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. आप कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं. Offline is preferable, but online is also okay, depending up to you that whether you're that much disciplined or not. Okay. Anybody else? Any other question? Feel free to ask question. Any doubt regarding the subject, if you have, you can definitely ask. Are you unavailable? No, I'm not available on an academy anymore, Ria. I have left an academy. I'm not part of an academy anymore. So I'm offering my optional only on this platform. Only on this platform. Momentum IAS. No other platform. From where I have been offering my optional. Anyone having doubt, please ask or raise your hand, or आप also you can mention your doubts in chat box. Any doubt regarding the subject that you have, कोई भी किसी तरीके का सवाल है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं.
छोटे से छोटे सवाल है, क्योंकि चीजें बहुत बेसिक लेवल पे ही है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, नॉट ए बिग डील। See few names: Rajendra, Vikas, Santoshi, Ankita. Any doubt you can ask? राजेंद्र, डू यू हैव एनी डाउट? सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कैसे समझे? छोटे छोटे, हाँ, विकास क्या पूछ रहे, थोड़ा दोबारा पूछिए प्लीज। सर क्वेश्चन को कैसे समझे? देखिए, वही मैंने कहा ना विकास, क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को कई बार नहीं समझ पाते। जब सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे ना तो क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे। यूपीएससी, मैंने क्या कहा, पहले की तरह स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो पहले से वो कई जमाने से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछ देती है अगर, तो फिर आपके लिए लिखना आसान था। अब के क्वेश्चन बड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरत है। और अगर आपको एक बार आपने सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली समझा ना, आई एम टेलिंग यू दैट यू वोंट हैव डिफिकल्टीज। आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। आप क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन किया है सब्जेक्ट से? हैव यू डन योर ग्रेजुएशन? बिकॉज पॉलिटिकल साइंस। नहीं, पॉलिटिकल साइंस से किया है, ओके, तो फिर मुझे इसका नहीं है पता। लेकिन अगर आपको, आपने क्या होता है कि जब आप हिस्ट्री को बाहर से देखते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा उसके बड़े डायमेंशंस को देखते हैं। जब आप अंदर से देखेंगे तो छोटे डायमेंशंस भी समझ में आएंगे। और दूसरा, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर होना। और मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कि कंसेप्ट पे काम नहीं करते, क्योंकि कंसेप्ट समझते नहीं, वो एक टेक्स्ट पढ़ते हैं और कंसेप्ट छूट जाता है उनका। तो अगर आपका कंसेप्चुअली आप बहुत साउंड नहीं है तो दिक्कत होगी, तो दिक्कत होगी। कंसेप्चुअली आप साउंड है तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हैं। तो पॉसिबल, कंसेप्चुअली समझिए सब्जेक्ट को। आप ऐसे मत देखिए कि ये क्वेश्चन है और इस किसी किताब में इसका आंसर मिलेगा। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन का सीधा आंसर किसी किताब में मिलेगा। वो अल्टीमेटली आपको फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। या जैसे ट्विस्टेड क्वेश्चन ये लोग यूपीएससी पूछते हैं, उसको समझने के लिए कई बार आपको जो है वो मशक्कत करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली समझिए। एनीबॉडी एल्स? आई So, गेस, या, can you please tell about how momentum coaching going to help for history optional? Can you please tell something courses, कैसे कैसे we are going to cover? well, the first thing, like, today itself, like, I was having a conversation with a student, and he was just asking so many questions, and he was saying कि सर मुझे तो सवाल ही नहीं समझ में आते, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जब तक आपका कंसेप्ट बहुत सॉलिड नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपके सवाल बहुत आप यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द, लाइक यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज हाउ वी आर वेरी डिफरेंट, आई मस्ट टेल यू। I always try to focus a lot in developing concept of the subject. अगर आप कंसेप्चुअली साउंड हो गए तो क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में भी आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी नोट से या किसी बुक से पढ़ के जाते हैं तो कई बार आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। तो वन ऑफ द थिंग दैट आई ऑलवेज डू, दैट आई ऑलवेज ट्राई टू डेवलप द कंसेप्ट कि व्हाट आर द बेसिक्स। अल्टीमेटली इट्स आल्सो अ डिसिप्लिन बीइंग स्टडीड बाय सर्टेन हिस्टोरियन। तो वहां पे भी कुछ मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स के बेस पे वो समझने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा हिस्ट्री को फैक्ट्स के बतौर समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो can you please remove this vector? Wait. डोंट लेट हिम इन। ओके, फाइन। तो पहली चीज है कि आई ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्ट, ठीक है। द सेकेंड थिंग व्हाट आई डू, ओके राजेंद्र, आई बी कमिंग टू यू। सर ये दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज ये है कि हम क्लासेस में जितना जैसे ही हम कंसेप्ट करते हैं, उन्हीं कंसेप्ट को मैं हमेशा डिक्टेट करा देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब यहाँ से निकल के जाते हैं तो उनके पास वही सारे आइडियाज जो है एक पेपर पे होता है, तो उनके लिए रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, चारों के लिए 4 बुकलेट्स होती है, और वो चारों बुकलेट का रिवीजन इज सफिशिएंट, इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू इफ यू आर रिवाइजिंग द सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से दूसरी चीज जो हम ये जिस पे फोकस करते हैं कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को कोई किताब ना पढ़ना पड़े। क्योंकि अगर आप क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं और क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि अरे यार ये तो रेलेवेंट कंटेंट है ही नहीं इसमें, तो फिर उसके बाद जो है आप किताबें पढ़ते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर, और आई ऑलवेज मेक श्योर, नॉट ट्राई, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर नॉट बाउंड और यू आर नॉट सपोज्ड टू रीड द बुक्स एंड यू आर गेटिंग एवरी रेलेवेंट कंटेंट इन द क्लास।
And the third thing I can say that I focus a lot on answer writing. As I told you, answer writing is very important. With a limited content, if you have the skill of writing the answer, I'm telling you that you might become successful. So this is the reason we go for very rigorous answer writing practice, that by the time the classes are ending, like in 4.5 months, by that time you develop the confidence कि ओके ठीक है यार, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं लिख लूंगा उसको, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो हम 3 डायमेंशन पे ज्यादातर करके काम करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास से जाने के बाद सिर्फ आप 15 मिनट वो नोट्स रिवाइज कर दीजिए, उससे काम हो जाएगा और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर, आई वांट अबाउट यूपीएससी एंड इट्स एग्जाम, how it conducts on basic level. Basic level मतलब what exactly you want to ask Santoshi? Can you ask मतलब directly, verbally? Can you ask the question because I could not understand it? पूछ लीजिए, आप ऐसे पूछ लीजिए। ओके सर, एक्चुअली मुझे उसका समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं प्रिपेयर करूँ, क्योंकि अभी मैं 11th में हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने कॉलेज के लास्ट तक मैं उसका एग्जाम दूँ। तो हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर इट? ओके संतोषी, आई गेस अभी आप जिस स्टैंडर्ड पे है ना, आपको अपने 12th में फोकस करना चाहिए। पहली चीज, लाइक यू जस्ट फोकस ऑन योर 12th, राइट? And the same NCRTs students are reading. What NCRTs you are reading right away, the same NCRTs students are reading after completing your completing their graduation. What I'm trying to suggest you, आप एक काम करिए, आप बहुत ज्यादा जो है अभी यूपीएससी की तरफ ओरिएंट होने की बजाय आप फोकस करिए कि आप जो कंटेंट, आप जो एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं या 11th की एनसीईआरटीज है, 12th की एनसीईआरटीज है, वो बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करें। देखिए, जब तक आपके बेसिक्स बहुत डेवलप नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि बेसिक से सवाल आते हैं। दे आर नॉट, यूपीएससी इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस लाइक नन्हे मुन्ने वाला क्वेश्चंस, ठीक है? यूपीएससी इज ऑलवेज आस्किंग वेरी टेक्निकल हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो उसके लिए, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप बड़ी चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके बेसिक्स या फंडामेंटल्स बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए। आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन रियली वर्क अपॉन योर बेसिक्स, and these basics are not, as I told you, not being to be not going to be asked directly. But then when you'll be reading the proper books for your UPSC preparation, then you'll be able to like do justice with your understanding, with your approach and everything. तो अभी आप सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करिए, अभी उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर, मैं अभी से इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रीम साइंस है। आपके पास साइंस है? जी, मैं पीसीबी ली थी। अच्छा, आपके पास पीसीबी है, कोई बात नहीं संतोषी। तो आप एनसीईआरटीज पढ़िए ना, आपको अगर वक्त मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं फोकस बोलूंगा आपसे कि 12th का रिजल्ट खराब नहीं करना है। तो अगर आपके पास बहुत वक्त नहीं है, आप पहली प्रायोरिटी आपकी है 12th का एग्जाम, बिकॉज आई थिंक यू ऑल नो ये जो अंधा रेस है आजकल मार्क्स का, और सही मतलब, क्योंकि इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले तो अपनी 12th में फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास उसके बाद भी स्पेयर टाइम बचता है, तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटीज पढ़िए, जो ह्यूमैनिटीज वाली एनसीईआरटीज है, ज्योग्राफी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उनकी एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं। तो साइड बाय साइड आपका ये चल सकता है। सो दैट यू कैन। ओके सर। तो सर, कोई बुक है मतलब जो मतलब मैं पढ़ सकती हूँ अभी? एनसीईआरटीज की किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी वाली, खासकर ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, आप उनको लेके उनको पढ़िए। कीप ऑन रीडिंग देम। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। यस, राजेंद्र, आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है? सर, ये हिस्ट्री ऑप्शनल का जीएस का जो आंसर होता है, और हिस्ट्री जी ऑप्शनल का आंसर और जीएस का आंसर, दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? दोनों में बहुत डिफरेंस है राजेंद्र। देखिए, जब आप ऑप्शनल के आंसर लिखते हैं तो आपसे एक तरीके की स्पेसिफिकेशन, एक स्पेशलाइजेशन एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, मान लीजिए आप एक सवाल आंसर लिख रहे हैं कि गांधी जी के ऊपर एक आंसर लिख रहे हैं। एक सिंपल सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, गांधी जी के ऊपर एक आप आंसर लिख रहे हैं। जब आप गांधी जी के ऊपर आंसर लिख रहे हैं तो आप सीधा 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 जो है गांधी के, अगर जीएस में लिख रहे हैं तो आपको बहुत एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ कुछ बातें गांधी जी के बारे में जो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको लिख देंगे। जब आप ऑप्शनल में वही आंसर लिखेंगे तो ऑप्शनल में लिखने के लिए आपको हिस्टोरियंस के जस्टिफिकेशन चाहिए होते हैं या उनके स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि आप अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई कर सकें। तो जो जनरल स्टडीज है, इट्स वेरी जनरल, एंड हियर एनी काइंड ऑफ स्पेशल और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम you, or any kind of special अंडरस्टैंडिंग इज नॉट expected from you.
When you have been writing the answer in the optional, in that case a very spatial, or let's say spatial or skilled information is in information as well as understanding is expected. तो आंसर एकदम अलग होता है, कंटेंट भी बहुत हद तक अलग होता है, मतलब बहुत हद तक मतलब टू ए ग्रेटर एक्सटेंट इवन द कंटेंट इज आल्सो डिफरेंट। सर यदि हम हिस्टोरियन का नाम नहीं लिखेंगे तो कुछ नंबर कटने की संभावना रहती है उसमें। यही इसीलिए मैंने कहा कि जो है सब्जेक्ट के पहले अप्रोच बहुत जरूरी होता है। जी। ठीक है, हिस्ट्री बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, हिस्टोरियन प्लस सोर्सेस। ऐसा नहीं होता है कि देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन पास्ट दैट इज हिस्ट्री, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। पास्ट में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है, हमें पास्ट को समझने के लिए हिस्टोरियंस हेल्प करते हैं और हिस्टोरियंस सोर्सेस को स्टडी करके हिस्ट्री लिखते हैं। तो कोई भी चीज ना बहुत एब्सोल्यूट नहीं है कि ऐसा ही था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एक हिस्टोरियंस ने उस तरीके से लिखा। तो आप सोचिए कि आपने एक चीज को अलग तरीके से देखा, मैंने अलग तरीके से देखा, तो फिर आप उसका कॉमन रास्ता कैसे बना के लिख सकते हैं? तो आपको तो यही लिखना होगा कि हिस्टोरियन सो एंड सो इज राइटिंग दिस एंड हिस्टोरियन सो एंड सो इज राइटिंग दिस। तो जहां जहां खासकर हिस्टोरियंस के बीच में कंसेंसस है, अगर सभी लोग मानते हैं कि नहीं यार चीजें ऐसी हुई, तो वहां पे तो आप हिस्टोरियंस के नाम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जहां थोड़ा सा भी डिबेट है वहां पे आप हिस्टोरियंस के नाम अवॉइड नहीं कर सकते। ओके। राइट? एनीबॉडी एल्स? Sir, हम्म। sir, this is Ankita. I'm studying BTech first year. हम्म। Basically, I didn't start reading for history. I didn't start reading NCERT. हम्म। I just started reading geography. ओके। So, how do you recommend, sir? Like parallelly study history with all other subjects, or study history separately? What is your like what optional paper you have been thinking for? Options paper. Just like I took NCERT books. I thought to read that's it. I don't know that about UPSC and syllabus. Okay, I think right now you should go for the like NCRTs, and one by one try to finish all the NCRTs like history NCRT, geography, then economics, then social issues. Okay, you first read or go through all the NCRTs. Agar the moment you have finished all these NCRTs, so you'll be able to develop some idea also that what optional paper you should go for. So you are in a very basic level at this particular moment. So you try to finish the NCRTs first, the old NCRTs, and after reading couple of old NCRTs from different disciplines, then you'll be able to have a better understanding. Then you don't need to bother about optional and like optional and such things in this particular moment. You only read NCRT for the GS perspective, and then in any subject if you develop your taste basically, let's say you started liking history, or let's say geography, or polity or constitution. So as per your taste, your understanding, your comfort, then you decide the optional later on. Okay, sir. Sir, to just complete the NCERT books of history separately, how Mhm. much time does it take? The span? I think this is depending that what is the other thing that you have been doing. Since you are like you're engaged in some other thing, so how much time you are able to spare in that, or give for that, like reading of NCRTs is depending on them. So if you have been giving 2 3 hours per day, so I guess the reading all the NCRTs is going to consume roughly around 1.5 month. That's it. 1.5 Okay, sir. month. Yeah. So personally, do you have any books separately for history? No, first read the NCRTs. For modern India, if you're not taking history as an optional paper, even though for the modern you need to read one book at least. So you can read the book of Shekhar Bandyopadhyay. That's a good book from Palasi to Partisi. But right now focus on NCRTs. Don't read the book right away. Read the book at the time of your UPSC preparation. When you have been doing it completely, you're much into this, you're completely into this UPSC preparation, then you read the books. Right now focus on the NCRTs. Okay, sir. Thank you. Anybody else? सर Yeah, किसी के ऊपर Suhani, go ahead. I'll come to you because हेल्प Sir, I am किसी के Sohani ऊपर Mishra, BTech Civil Engineer second year. सर मेरा क्वेश्चन है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री एक बात सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शनल के लिए परफेक्ट नहीं है. कैन यू सर एक्सप्लेन हिस्ट्री इज परफेक्ट और नॉट? अच्छा, ये जो है सबसे पहले मुझे लगता है कि ये जो परफेक्ट वाला कंसेप्ट है, ये मुझे लगता है कि बड़ा अजीब सा है। देखिए, आप हिस्ट्री ऐसे
ऐसा तो नहीं कि यू आर टेकिंग हिस्ट्री, मतलब यू आर नॉट लाइकिंग एट ऑल हिस्ट्री, बट इवन दो यू आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट, इज इट लाइक दैट सुहानी? So, sir, I will interested in history, but some people ask me history is vast, so because optional subject is not perfect. ओके फाइन। देखिए दो चीजें हैं, आप यू आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट व्हाई, बिकॉज यू आर लाइकिंग इट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, whether the results are coming from history optional or not. Yes, सुहानी, sir. रिजल्ट्स आर Yes, आल्सो sir. कमिंग। लास्ट ईयर का टॉपर हिस्ट्री ऑप्शनल से है। तो देखिए दो चीजें हैं, अब सवाल ये होगा कि लाइक जस्ट यू हैड बीन लाइकिंग हिस्ट्री बट यू लेफ्ट हिस्ट्री ओनली फॉर दिस रीजन दैट समबडी टोल्ड यू दैट इट्स वेरी वास्ट, देन व्हाट हैपन, यू स्विच टू अनदर ऑप्शनल। अब क्या है, लाइक that optional you have to spend roughly around 1.5 or 2.5 years with that optional if you're getting selected in 1 or 2 years, 1 or 2 attempts. And if you're not liking any subject, you have taken it as an optional paper, and it is really going to be very torturous for you, as you won't be able to adjust with this, right? Now the next thing, whether history is vast or not, like of course history seems to be vast. Do you know why? Because if you'll see the syllabus of history, it is actually distributed or written in multiple pages. If you'll see the syllabus of the other subjects, you'll find that it is ending in just 3 or 4 pages. This creates that doubt. In history, what happens na Suhari, like they have given a detailed topic, they have given the detailed let's say decoded syllabus. Whether on the in the others optional paper you won't find this much detailed and decoded syllabus. So history का syllabus देख के कई बार बड़ा लगता है। The second thing, how much time you require to finish or like cover this optional paper? ठीक है, कुछ लोग तो 3.5 महीने में भी इस ऑप्शनल पेपर को खत्म कर देते हैं, बट ठीक है, मुझे लगता है कि वो जाती है, दिस इज इनजस्टिस विद द सब्जेक्ट। I think within 4.5 months to 5 months, this optional paper definitely can be done. And I am telling you that if you are really serious for any optional paper, in that case, like every optional paper जिसके लिए कहते हैं कि बहुत सिलेबस छोटा है इसका, जो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये 2 महीने में खत्म हो जाता है, आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऑप्शनल पेपर कम से कम मिनिमम 4 महीने और मैक्सिमम 5 महीने वो लेता है, ठीक है। तो हिस्ट्री भी मुझे लगता है 5 महीने लेगा, ठीक है, मैक्सिमम अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इतना ही फर्क है। वास्टनेस की अगर बात करें तो इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मैं ये भी कहूँ तो हिस्ट्री में बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो लोग ये तो नहीं बताते हैं कि बाकी एरियाज में बहुत एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री में बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लोग नहीं बताएं। ठीक है, हर सब्जेक्ट की कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव्स है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, बट 4.5 से 5 महीने में सिलेबस इसका भी खत्म हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस भी लेंगे तो इतना वक्त लगता है, ज्योग्राफी में भी मुझे लगता है 5 महीने, काफी बड़ा सिलेबस है। तो हर वो जो पॉपुलर ऑप्शनल पेपर है 4 से 5 महीने लगते हैं उसको। इवन जो लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी का सिलेबस बहुत छोटा है, उसमें भी अगर एक टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं तो 4 साढ़े 4 महीने का वक्त उनको भी लगता है, तो ये गलत है कि इतना वक्त लगता है। इट्स ऑल्सो ए नॉर्मल पेपर, ठीक है, दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड। ऐसा नहीं कि Okay, सिर्फ sir. Thank you. हाँ हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले ही बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और शायद 6 महीने या 8 महीने की प्रिपरेशन के बाद, 1 साल की प्रिपरेशन के बाद ही वो लोग पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो, तो ये गलत हुआ है। ओके अंकिता, सर प्लीज मेंशन द ओके अंकिता, अगर आप मोमेंटम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, इफ यू गो टू द मोमेंटम आईएएस नो ये यूट्यूब चैनल, there is a video I have done, and there I have talked about all the relevant books, and in fact I have also discussed that what are the areas which are relevant from that book, so you just please consult that video. Momentum, you'll find it in the platform on the Momentum IAS YouTube channel of the Momentum IAS. हाँ विकास बताइए। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूँ, स्टार्ट कहाँ से है, इससे इंट्रोडक्शन अच्छे से अच्छा बन सके। देखिए ये प्रोसेस है विकास, ये मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, जब तक आप आंसर लिखेंगे नहीं, आप उनसे चेक नहीं कराएंगे, तब तक थोड़ा मुश्किल है ये बताना। आंसर का इंट्रोडक्शन क्या होता है ना, कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में एक अलग पैटर्न है जो फॉलो होता है आंसर इंट्रोडक्शन भी लिखने के लिए, बॉडी को भी लिखने के लिए और कंक्लूजन को भी लिखने के लिए। अच्छा, हिस्ट्री में भी अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका अप्रोच अलग अलग होता है, तो मुझे लगता है कि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, जो हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे तभी मैं आपको एक आइडिया दे पाऊंगा, और ऐसे मैं आंसर राइटिंग के ऊपर एक सेशन अलग से करूंगा, तो आप उसको थोड़ा अटेंड करिए। ओके सर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? I guess okay, it's done. Done all the questions, sir.
So Yeah. I think we should wind up now. Okay. Thank you. Thank you, Vikram. Yeah. Thank you, all of Fine. you, Thank for you so much, joining sir. the Thank you, session. guys. If anyone, so if anyone having any doubt related to the classes, related to my momentum IAS, so you all having my number, you guys can feel free to contact me. Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir.